हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके शॉर्ट हैंड प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 30 फ्रॉम द मैगजीन स्पीडोग्राफी बाय डॉक्टर जी डी बिस्ट वॉल्यूम 1। इससे पहले हमने सुबह इसकी डिक्टेशन करी थी। आई होप कि आपने डिक्टेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। अब हम इसकी ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे और सीखेंगे इसमें जितने भी डिफिकल्ट आउटलाइंस हैं और उन डिफिकल्ट आउटलाइंस की अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो भी होंगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, आई एम नॉट हैविंग मच टाइम। I am not having much time। ठीक है फ्रेंड्स। अब I am not को हम इस तरीके से डाल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और having much time को इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है, कॉमा, अदरवाइज, अदर इसके साथ ही हम वाइज डाल लेंगे। I would quote, I और would quote certain figures which I have with me, comma, with regard to students demonstrations, full stop। there have been 75 disturbances। इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, disturbances, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, disturbances, ठीक है फ्रेंड्स। विद इन एस, जो फ्रेंड्स ये जो एस मैंने लास्ट में डाला है, इसको थोड़ा सा आपने लूप इसका बड़ा खींचना है, ठीक है, और यहाँ पे इस एस का भी थोड़ा बड़ा लूप बना लीजिए क्योंकि ये डिस्टर्बेंसेस है, ठीक है। विद इन 2 months इस तरीके से भी लिख सकते हैं और 2 months इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एंड दीज डिस्टर्बेंसेस आर स्टिल देयर, एंड दीज disturbances are still there, full stop। as a result of these disturbances the whole peaceful life of the people, comma, the whole peaceful life of the people is disturbed इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ disturbed इस तरीके से, full stop। next, then I have got figures which, then, comma, I have got figures which will show how much इसके साथ ही लिख लेंगे, loss we have been put to as a result of these agitations and strikes by government servants, by government इस तरीके से भी लिख सकते हैं और by government इस तरीके से भी लिख सकते हैं, servants, comma, workers and other people, full stop। during the last year, comma, 69 lakh man days were lost, full stop। this year एक साथ ही लिख लेंगे, comma, more than 3 crore man days were lost, and out of these at least, comma, 2 crore man days were lost in West Bengal, full stop। so, comma, it is not merely a trend, comma, but it is a danger to our democratic way of life, full stop, paragraph change। नेक्स्ट चलेंगे फ्रेंड्स हम आगे। अब देयर माइट बी अदर रीजंस, देयर माइट बी साथ में लिख लेंगे,
other reasons, but there are certain parties which would like to take advantage of that, full stop. Okay friends, next what is advantage of that? What is the total effect of all these? What is the total effect of all these on our social life, of all these on our friends, एक साथ लिखेंगे, on our social को अच्छे से बनाएंगे, social life, question mark. Today what do we find as a result? Today, comma, what do we find as a result of these agitations? As a result of these agitations and disturbances, question mark. A feeling of doubt is growing among the people as to whether there is a rule of law in this country, or not, question mark. When the man in the street sees so much को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, damage of property, comma, when he sees so many और many एक साथ लिखेंगे, man days lost, comma, when the middle class man sees that the whole life as also the administration is paralyzed. What is the effect on him, comma, what is the effect on him, question mark. Will he have any faith left? Will he have any faith left in the peaceful way of life? In the peaceful way of life, question mark. This is the result of these disturbing factors, and they are no more trends, only, full stop. That is my point, full stop. These agitations are no more trends, as has been described by the president, in his address, full stop. They have become evils and threaten very much our peaceful way of life, full stop. So you must take note of them, full stop, paragraph change. Then there is another evil looming large and threatening, the very secular and national life of our country and
दैट इज द evil ऑफ कास्टिज्म, दैट इज द evil ऑफ कास्टिज्म, फुल स्टॉप। इफ आई कैन, आई कैन इस तरीके से लिख सकते हैं। गिव यू इस तरीके से लिखेंगे हम, ए फ्यू फिगर्स कॉमा ड्यूरिंग द पास्ट 3 years, 3 years comma there were as many as 200, there were as many as 200 है, इसको इस तरीके से लिखेंगे, riots in the country full stop close। सो फ्रेंड्स ये थी ट्रांसक्रिप्शन नंबर 13। अब हम इसके बीच में जो हमने थोड़े वर्ड्स पढ़े हैं उनकी थोड़ी अल्टरनेटिव फॉर्म्स देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट में यहाँ बनाएंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो हम यहाँ पे बनाएंगे फ्रेंड्स, इसमें पहला हमने पढ़ा डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, वो हमने बनाया इस तरीके से डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, एक फॉर्म ये है, दूसरी फॉर्म इस तरीके से डिस्टर्बेंसेस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट इस तरीके से, गवर्नमेंट इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद जो हमने यहाँ पे पढ़ा वो हमने पढ़ा वेस्ट बंगाल, ठीक है फ्रेंड्स। वेस्ट बंगाल को हम वेस्ट और बंगाल ये हमने इस तरीके से लिखा सेपरेट, हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं इस तरीके से, वेस्ट और बंगाल, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपने कोशिश करनी है कि आप जितना शॉर्टर वे में लिख सकें ना आउटलाइंस को, आपने उतने ही शॉर्टर वे में लिखना है, क्योंकि शॉर्टर वे में लिखने से ही हमारी जो स्पीड है वो जल्दी बढ़ेगी, ठीक है। अगर हम लॉन्ग वे में लिखेंगे तो उससे हमारी स्पीड डिक्रीज होती है, ठीक है, ये चीज़ हमने याद रखनी है और शॉर्टर वे में ही लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब चलेंगे हम आगे, करोड़, ठीक है, करोड़ आया था, करोड़ को हमने लिखा है इस तरीके से, आप करोड़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एज अ रिजल्ट है जो, वो हमने लिखा एज अ रिजल्ट, ठीक है, एज अ रिजल्ट को आप एक साथ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग इस तरीके से भी, और डिस्टर्बिंग इस तरीके से भी, डिस्टर्बिंग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें हमने एक चीज पढ़ी 200 करोड़, ठीक है, 200 को हम कंप्लीट भी लिख सकते हैं, पर अगर हम ये तरीका अपनाएं तो इससे शॉर्टर होगा, इससे शॉर्ट में बनेंगे, ठीक है, वर्ड्स। सो फ्रेंड्स यही था इस ट्रांसक्रिप्शन में। आई होप कि आपको समझ आई होगी ये ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, और पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लें, जेके शॉर्ट हैंड प्लानर से ही है मेरा टेलीग्राम चैनल भी, और वहाँ पे आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।